Hello, my friend Namaskar. So, what is RAID 5 and how the examiner is going to ask the question? So, let's understand the concept first. Then we are going to solve this numerical which asked in the UBI examination. Okay. So, first I will explain in Hindi. First English, then in Hindi I will explain so that you can understand it very clearly. Okay. So, moving ahead. So, RAID 5. So what happened in a RAID 5? See, what is the RAID? So it is a technique in which we are going to store our data. So if any mishappening is there, so that we can also recover our data. So it is a way to store the data. In that we are having a RAID 1, RAID 2, RAID 4, RAID 5 like this. So how the RAID 5 works? So RAID 5 use data stripping. So what is the meaning of data stripping? That you are not storing your data in one place. You are having a large data and you have divided the large data into small parts. Then you are now we are having the parity bit so that if any mishappening is there, so we can recover it. So how the parity bit works? Okay, so let's understand how it works. Parity bit. Okay, so let's suppose if you have stored, let's suppose you are having a movie. Okay, you are having a movie and that movie is having, let's suppose, some data in it. Let's suppose movie of 2 GB, or we can say movie of 4 GB you are having. So you have divided your movie into four parts: part 1, part 2, part 3, part 4, and each part is having 1 GB. So when you are going to combine, it will become a movie. Okay, so let's suppose you are having the four hard drive: one hard drive, two hard drive, three hard drive. Now you are having the collection in which you have stored the data. con el cual vamos a poder combinar tres. Okay, now you are having this hard drive and you have splitted your data. Now let's suppose I am having a number. Let's suppose if I say that set 2 plus 4 plus 1 plus 3 is equal to 10. Okay, now this 2 is stored in a hard drive, this 4 is also stored in a hard drive, and this 1 is also stored in a hard drive, and this 3 is stored in a hard drive 4. Let's suppose hard drive 4. Okay, now each is stored in separate hard drive. When you are going to combine it, it will become 10. So let's suppose any mishappen is there. Let's suppose this hard drive got crashed. ये जो hard drive, it got crashed. Now this parity bit, which is also stored in a separate hard drive, from this we can recover the data. So what I will do, I will add here 4 plus 1 plus 3, it will become 8, and I know that the total should be 10. So I can recover this value from this parity bit. So same thing happening over here. We are having a large data, and that data in split it into parts. So let's suppose we are having a movie A. So movie A is divided into three parts: A1, A2, A3, and this in hard drive 4 or 3 we are storing the parity bit, so that if any hard drive, any one, keep in mind, if two hard drive fail, then I am not able to recover the data, but only one hard drive fail, I can able to recover data. So a movie stored into three part, then this is parity bit. Same happen for b1, b2, and here I am having b3. This is the parity bit. Now c1 parity bit, c2, c3. Same happen for d. If any one hard drive fail, I can recover my all four movies. Okay, so this is the use of parity. And what is the stripping? I am not storing my whole data in one hard drive. I have divided and it's stored into four parts. Okay, so what does it say? Okay, now let's solve this question. Okay, now you have understood what is the RAID 5. So what does it say? That you want to configure a RAID 5 using the four hard drive, each having a capacity of 2 TB. What is the total usable store available? Okay, now I'm using RAID 5. So in that RAID 5, I know that one hard drive, or we can say one space, is being allocated for the parity bit. It means when I do the calculation, I need to have a fault tolerance. For that, I will use one hard drive. So in total, I was having here four hard drive. Four hard drive I am having. Four hard drive, and each hard drive is of 2 TB. So
total available space is I'm having 8 TB without the RAID configuration. Now I want to do the RAID 5. So RAID 5, what will say? It will say that sir, you are having the 4 drive, and among the 4 drive I want to use one drive. So one drive is being used. It means n minus 1. It means I am having the n minus 1. So initially I am having the 4 minus 1. It will become 3. So the available hard drive I am having 3. So each hard drive is of 2 TB. So the total available space I am having 6 TB. So the right answer for this question 60. Now I believe you have able to answer the question. So now I will explain in हिंदी. देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके पास में हार्ड ड्राइव्स है, ठीक है. सो जब हम रेड 5 यूज़ करते हैं, देखो आपका रेड 0, रेड 1, रेड 2 अलग अलग होता है. तो रेड 5 क्या कहता है? रेड 5 कहता है कि सर आपको क्या है, डेटा स्ट्रिपिंग भी है करना. डेटा स्ट्रिपिंग होता है कि आप पूरा डेटा एक जगह मत रखो, डेटा को अलग अलग पार्ट में स्टोर करो. और पेरिटी क्या कहता है? ये कहता है कि सर अगर उसका सम या कुछ हम एक जगह रख लें, कुछ अगर हार्ड ड्राइव फेल हो जाए तो हम डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं. सो लेट सपोज मेरे पास 4 हार्ड ड्राइव है. हार्ड ड्राइव 0, हार्ड ड्राइव 1, हार्ड ड्राइव 2, हार्ड ड्राइव 3, लाइक दिस. सो लेट सपोज मेरे पास एक मूवी है ए मूवी को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. नाउ अब यहाँ पे मैंने स्टोर क्या किया है? पेरिटी स्टोर किया है. अब लेट सपोज अगर ये वाली हार्ड ड्राइव मेरी हो गई क्रैश, तो बाय यूजिंग दिस पेरिटी बिट आई कैन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A3. सेम मेरे पास अलग मूवी थी बी, तो बी मूवी को मैंने 3 पार्ट में स्टोर किया, B1, B2, B3. अब ये देखो बी की जो पेरिटी वो यहाँ स्टोर की है, सेम सी का मैंने यहाँ स्टोर कर लिया. और डी जो हार्ड ड्राइव थी, डी कोई मूवी थी, D1, D2, D3, इसका जो पेरिटी बिट है मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया. अगर मान लो ये वाली हार्ड ड्राइव फेल हो गई, तो A1 की जो वैल्यू है मैं इस ये जो पेरिटी बिट है इसे निकाल सकता हूँ. B1 की जो वैल्यू है, ये जो पेरिटी बिट इसे निकाल सकता हूँ. C1 की जो वैल्यू है इसे निकाल सकता हूँ. और जो D है पेरिटी बिट, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं. इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, D1 प्लस D2 D3, आई विल गेट D4. सो कोई भी हार्ड ड्राइव फेल होती है, वी कैन रिकवर द डेटा. बट इसमें क्या होता है, एक हार्ड ड्राइव, अगर आपकी मल्टीपल हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, देन देर इज नो वे यू कैन रिकवर द डेटा. सो अब रेड 5 क्या कहता है? रेड 5 कहता है कि सर आपके पास में जितने भी हार्ड ड्राइव है, उनमें से n माइनस वन एक हार्ड ड्राइव आप यूज़ करो टू स्टोर द पेरिटी. तो अब हम इससे होगा क्या, हमारा जो डेटा लॉस होगा उसको हम रिकवर कर सकते हैं. फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ ओनली वन हार्ड ड्राइव. सो जितने भी हार्ड ड्राइव है n माइनस वन. सो आप जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपके पास में 4 हार्ड ड्राइव है. इसका मतलब एक हार्ड ड्राइव तो मेरा इसके लिए यूज होगा टू स्टोर द पेरिटी. अब मेरे पास कितने हार्ड ड्राइव बल्कि n माइनस वन. सो द अवेलेबल हार्ड ड्राइव आई एम हैविंग 3. एंड ईच हार्ड ड्राइव ऑफ कितना स्पेस है? 2 TB के लिए कह रहा है, तो 3 इंटू 2 TB, 3 इंटू 2 TB. ओके. सो अब 3 इंटू 2 TB मैंने किया, तो मेरे पास कितना स्पेस आ गया? 6 TB. अब जो अवेलेबल स्पेस है आफ्टर अप्लाइंग द रेट 5, आई एम हैविंग 6 TB. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 TB. नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट 5. ठीक है. सो इफ यू हैव एनी डाउट, यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ वीडियो. वीडियो अच्छा लगा सो यू कैन हिट द लाइक बटन. इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.